हेलो एवरीवन एंड कसं काय मंडळी, मैं हूँ अंजलि एंड यू गाइज आर वाचिंग अवर चैनल वॉन्डरिंग सीकर। तो अभी मैं जा रही हूँ घूमने दुर्गा रितिका के साथ। यहाँ पे एक सिटी है सेंटा क्रूज करके, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है कहीं पे जहाँ पे क्या क्या है आप आगे जाकर देखो। सो स्टे ट्यून। सो अभी दुर्गा रितिका आएंगे मुझे और आर्या को लेने। स्कूबी उधर है, मैं और आर्या इधर है, तो फिर हम लोग निकलते हैं। ये देखो फ्लावर कैसे आए इधर, उधर भी है पीछे। अभी रितिका दुर्गा आ गए, मैं रेडी हुई हूँ, अभी जा रहे हैं हम लोग। बीच पे भी जाने का प्लान है, तो देखते। We are going सो अभी हम लोग अभी आ गए इधर मिस्ट्री स्पॉट करके ये जगह है। यहाँ पे ग्रेविटी का कुछ बोलते ना, क्या है रे रितिका, थोड़ा एक्सप्लेन कर। तो इसको ज्यादा पता है क्योंकि इसने चूज किया ये जगह। हमको खुद नहीं मालूम, जाके देखेंगे हम। हाँ, तो फिर मिस्ट्री सर्च कर लीजिए नेट पे। अगर तुम लोगों को अगर चाहिए कि क्या है करके, तो नेट पे सर्च कर लेना मिस्ट्री स्पॉट सेंटा क्रूज। तो अभी जाते आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैंने भी देखा है नेट पे, लेकिन लेट्स सी। और आर्या और स्कूबी को कार में ही रखने वाले, क्योंकि यहाँ पे ओनली सर्विस डॉग अलाउड है। और ये देखो, सो यहाँ से एंट्री है मिस्ट्री स्पॉट का, और अंदर पूरा जंगल जैसा है, पूरे पेड़ है यहाँ पे। और वहाँ पे रितिका अपना ग्लासेस लेकर आ रही है। फोटो खींचते खींचते मैडम का पाँव में लग गया, अचानक से दर्द शुरू हो गया। हम लोग अभी तक अंदर नहीं गए, बाहर ही फोटो चल रहा है। चलो हाँ पता नहीं, शायद यहाँ पे टिकट लेने गया होगा। नहीं, वो अंदर आया। तू कहाँ जा रही है? इधर रेस्टरूम यहाँ पे। सो बेसिकली इसको मिस्ट्री स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के वजह से हम लोगों को बहुत सारे इल्यूशन होते हैं, जिसमें कि आप अगर हाइट चेंज करोगे, वहाँ पे कोई स्पॉट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी का सोर्स है, उसके वजह से हम लोगों को हाइट के इल्यूशन, एट द सेम टाइम आपको वो जगह का एक हेवीनेस फील भी होगा। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे हमको फील हो रहा था, आपको भी वीडियो में दिखाई देगा। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड एंजॉय दिस वीडियो। Good afternoon. How is everybody doing this afternoon? Good. I am so glad to hear that. I am doing fine as well. Thanks for asking about me. I don't think it's funny. I think it's kind of sad. Now, my name is Maurice. My friends call me Mo. I'm going to be your tour guide. I usually stand here and I talk in this direction. I know I look good from behind. I'm much better looking from the front. Choice is yours. Have any of you guys ever been to the mystery spot before? No. You have? How long has it been? Last year, 6 months back. Nothing's changed in 6 months, okay? Not even the jokes have changed in 6 months. So we can take pictures. We can take videos. We can do whatever we want. And kids, when I say you kids can do whatever you want, I mean it. Go crazy. I do not care. You're not my children. Have fun, okay? Now, friends, this place called the Mystery Spot started over 80 years ago, a long time ago. All the land from these hills here to the hills on the other side of the parking lot,
This was all owned by lumber companies. They had been clear cutting the land for years. They were chopping down all the trees. They were selling the land off when they finished with it. A man bought this land because he wanted to build a house in the flat area, and that's where our gift store sits today. But when a group of surveyors came out to mark property lines, those are the people who discovered the mystery spot. They noticed three things. The first thing that they noticed strange, as they started walking up this hill, it felt harder than they imagined. It was like a force was pushing against them as they walked up the hill. Are you kids looking forward to that? Yeah. Oh, imagine doing it 5 times a day. Second thing, compasses gave funny readings. Sometimes a slight 2 to 3 degrees off, but at other times in other locations, compasses could be 180 degrees off. So sometimes south could appear to be north, north would appear to be... Woo! Interactive too, we're getting you guys warmed up. The third thing, they started to notice the strange stuff. It did not happen all over George Prather's new land, but it was only over here in a small zone. That's why we call this the mystery spot. From where we're all gathered now, it's about 300 feet straight across. It's about the length of a soccer field. There's an invisible circle that goes up this hill. It wraps back behind a cabin we all go into later. It comes down our other hill. It splits the trees, and then it continues back up again. Blouse, you're a little bit taller right at the top of your friend's head. Would you agree with that? Yeah. Friend, inside you're a little bit shorter, maybe looking at the chin. Would you agree there's a taller person and a shorter person? Could my friends step off the boards and switch sides with each other? Yeah. Take your time. And look at each other again. Did you notice a change that took place? Because it appears your eye level has now raised up to the nose. Yeah. You're still taller, but no longer at the top of the head. Actually, you didn't get taller. You got a little bit shorter as you entered the mystery spot. It's only temporary, though. Give my... हम लोग पीछे चलेंगे, हम लोग का छेका और इधर चढ़ाई इतना खतरनाक है. You guys the last 3? Yeah. You're good wherever you guys feel most comfortable. Well, first of all, does everybody notice the crooked building? Yeah. Mr. Prather built this building over 80 years ago, but kids, he didn't build it crooked how and where we see it. Mr. Prather originally built this building about 30 feet up the hill on a flat level surface. As we look, does it point up and down? Do you think it points down and out, or do we think it's flat level even? It looks up and down. No, it's so. To my younger friends, do you guys remember how bubbles go up on a level? I'm going to place my level on top of the board. How are you, sir? Could you come up front and tell everybody in your best tour guide voice where the bubble's at, but don't stay on top. He's in the middle, right? Give him a round of applause. Hey kids, you guys see that? The bubble's in the middle? It's an optical illusion that makes the board look up or down. It's a flat level board. Now, if I... So यहाँ से आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा इसको मिस्ट्री स्पॉट क्यों कहते हैं अगर आप आगे ये वीडियो देखोगे. I can set my chapstick on the flat portion. If anybody thought it was the knots, this is on the flat part of the board. It's not inside that groove. I could invert, I could flip the board over. I rotate it 180 degrees. I can pour water onto the board. That also gets forced out. But this time it comes out as vodka. Do you know that was just a joke, right? It was vodka the whole time. Now, सच में कुछ मिस्ट्री स्पॉट है क्योंकि यहाँ पे आकर चक्कर आ रहा है और रितिका का भी सर घूम रहा है. ये पूरा हम लोग पहाड़ के ऊपर है. don't stop in the doorway. The faster everybody sees the demonstrations, the more time everybody has. वीडियो लीजिएगा जब अंदर जाएगा. आ रहा है ना? Oh my God. So, जैसे जैसे घर के क्लोज आ रहे थे हम लोग, इतना हेवी लग रहा था, मेरा सर भी पूरा घूमने लगा था. जैसे ही मैंने स्टेप अंदर लिया बस
मुझे इतना कुछ फील हो रहा था वो ग्रेविटी के वजह से कि बोलो मत। और यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोगों को कि क्या है कैसे है, ये ग्रेविटी के वजह से ये घर को ऐसा टेढ़ा बनाया है क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी एक साइड पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अगर वो जो आप देख रहे हो जो वहाँ पे लटके वो लटक भी रहे थे तो उनका पूरा बॉडी सोर्स वन साइड में जा रहा था। और इधर वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो इधर ऊपर चढ़े टेबल पे तो गलती से भी उड़ी मार के नहीं आना क्योंकि ग्रेविटी की वजह से तुम फिर से पीछे जा सकते हो, इसलिए टेबल पे भी उन्होंने स्टेयर्स रखा था। Pull you backwards, use the steps. So, table here, handholds there. I'm going next door for 2 more demonstrations. After those, we have the whole cabin. If you Is this Iha? Oh my god. It's too much. रितिका मुझे चक्कर आ गया। Oh, it's really bad. I know, right? Yeah, I can't move. Hey, don't get too close because I'm gonna swing. What this is called, if I give you guys a hint, it begins with a P and it rhymes with pendulum. This pendulum is a 32-pound zinc-covered lead weight. Oh, it's heavy. Hey, only swing it at some people if they deserve it. We feel it easy one direction. It's hard to push the other, which means it's going to swing further one way than it does the other. We don't expect that from a norm pendulum. It's zinc and lead, no magnets. Not an optical illusion, something we could feel for ourselves. Kids, guess what? Some people come over here. I'm going to get right behind you for 1 second. Kids, do you guys see these steps? Some people put a left foot on a step. They move their right foot to the wall, and then some kids pose like they're Spider-Man. Now we all have the whole cabin. In 10 minutes, we go out for more demonstrations, but now you have the whole cabin. Have fun. Be safe. ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो भी देखना, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ सॉइल।